This video is for grade 1st. So let us start. We have 3 different sections in this sheet. So we will learn about 3 different subjects, which are English, Maths and EVS. So let us start with our first subject, English. The question is, change the gender of the underlined noun and rewrite the given sentence. इसमें हमें क्या करना है? वी हैव टू चेंज द जेंडर. इसमें हमें जेंडर को चेंज कर देना है. अगर मैस्कुलिन है तो फेमिनिन में, अगर फेमिनिन है तो मैस्कुलिन में. ओके, यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें एक नाउन है, ओके, जो कि या तो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है और उसको अंडरलाइन किया हुआ है. हमें क्या करना है? उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन और फेमिनिन से मैस्कुलिन में चेंज करना है और फिर सेंटेंस को रीराइट करना है. सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, वी सॉ अ टाइगर इन द जू. हमने जू में एक टाइगर देखा. सो यहाँ पे जो टाइगर है ये एक मैस्कुलिन वर्ड है. इट इज अ मैस्कुलिन. ये मेल टाइगर की बात हो रही है. ओके, now we will change it into female, feminine. It will become tigress. 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 We saw a tigress in the zoo. Tigress. See the next sentence. The sentence is, the queen is so beautiful. The queen is so beautiful. Queen मतलब रानी. तो क्या है? रानी क्या हुई यहाँ पे? फीमेल. सो यहाँ पे कहा है द क्वीन इज सो ब्यूटिफुल, मतलब रानी बहुत सुंदर है. तो क्वीन का क्या होगा? मैस्कुलिन. किंग की क्वीन होती है, सो इट विल बिकम किंग. मैस्कुलिन, वी विल चेंज इट इन मैस्कुलिन, मेल. द क्वीन इज सो ब्यूटिफुल, इट विल बिकम द किंग इज सो हैंडसम. ओके, एज वी ऑल नो, जब हम किसी फीमेल की बात करते हैं देन वहाँ पे हम ब्यूटीफुल का यूज़ करते हैं. अगर किसी मेल का वर्ड है तब वहाँ पे हम हैंडसम वर्ड का यूज़ करते हैं. हैंडसम. द किंग इज सो हैंडसम. KING, किंग. HAND, हैंडसम. SOME, सम. हैंडसम. द किंग इज सो हैंडसम. Third sentence, my sister is the best. My sister is the best. तो इसमें हमें क्या चेंज करना है? सिस्टर इनटू ब्रदर. My brother is the best. My brother is the best. BROTHER, brother. BROTHER, brother. So in this way we have to change rest of the words, rest of the sentences into another gender. दूसरे जेंडर में हमें कन्वर्ट कर देना है. अंडरस्टूड? या. So let's move to the next section, which is of maths. Write the number that comes after. In both the questions of maths, we have to write what comes after. Okay, what comes after. मतलब इस नंबर के बाद क्या आएगा ये हमें राइट करना है. एंड आई नो यू ऑल कैन डू दिस. What comes after 9? 10. Yes, exactly. 10. 10 comes after 9. What comes after 17? What comes after 17? 18.
What comes after 17? 18. Yes, 18 comes after 17. Very good. What comes after 19? 19 के बाद क्या आता है? Yes, 20. 20 comes after 19. Very good. Now what comes after 26? 26 के बाद क्या आता है? What comes after 26? 27. Very good. 27 comes after 26. So in this way only you have to write what comes after. What comes after 12? 13. Yes, 13 comes after 12. इसी तरीके से आपको राइट करना है कि दिए हुए नंबर के बाद क्या आता है. फॉर दिस यू कैन ऑल्सो रिवाइज काउंटिंग. अब काउंटिंग भी रिवाइज कर सकते हो. अंडरस्टूड. सो लेट अस रिवाइज काउंटिंग फ्रॉम 1 to 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50, 50. So by reading counting, you can also write what comes after. Let's move to the last section of the sheet, which is EVS. Paste a picture of traffic light and answer the following questions. In the box which is given on the right side, इसमें क्या करना है आपको? यहाँ पे एक ट्रैफिक लाइट की पिक्चर चिपकानी है. You have to paste a picture of a traffic light. Okay, ट्रैफिक लाइट की पिक्चर पेस्ट करनी है. As you all have seen on roads, traffic light is there in which 3 colors are there which define 3 different things. Red, yellow, green define stop, wait and go respectively. Okay, so यहाँ पे आपको ट्रैफिक लाइट की पिक्चर पेस्ट करनी है एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन. उसके बाद ये क्वेश्चंस के आंसर राइट करना है. विच लाइट टेल्स अस टू स्टॉप? कौन से लाइट हमें कहती है कि रुक जाओ, स्टॉप? Red light. Yes, red light tells us to stop. It says danger. Do not move ahead. Stop at your place. Okay? आगे डेंजर हो सकता है इसलिए आगे मत बढ़ो, अभी अपने जगह पे रुक जाओ. Which light tells us to wait? कौन सी लाइट हमें वेट करने के लिए कहती है? मीन्स वेट, बस हम लोग जाने वाले हैं. वेट, वेट एंड बी रेडी, तैयार रहना है. ओके, वेट. येलो लाइट. यस, येलो लाइट टेल्स अस टू वेट, दैट वेट फॉर अ फ्यू मोमेंट. विच लाइट टेल्स अस टू गो? कौन सी लाइट कहती है कि जा सकते हो आप? गो. यस, ग्रीन लाइट. ग्रीन लाइट says us to go. It is safe. You can go now. And how many lights in the traffic signal? We all know there are 3 lights: red, yellow and green. 3 lights. So this was all about today's sheet. I hope you all have understood this sheet very well. If you still have any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you can ask me. Thank you.